So let us start the topic supply. Supply क्या होता है? Supply comes from the producer. It comes from the producer and demand comes from the consumer. तो सप्लाई क्या होता है? सप्लाई सिंपली हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि the goods and services produced by a producer and supplied to a market, to the market for sale. Supplied to the market, the amount supplied to the market for sale, or we can say it is the quantity of a good which a producer is willing and able to sell at a given price. Yes, sir. Simply हम कहेंगे supply is the quantity of a good, supply is the quantity of a good which a producer or seller is willing and able to sell at a given price. At a given price पे जो मार्केट प्राइस दिया हुआ है उस पे एक प्रोड्यूसर या एक सप्लायर कितना सेल करने के लिए तैयार है. Yes, that sir. is supply. That is supply. The quantity of a good that a seller is willing and able to sell in the market at a given price. So Yes, sir. we can say it is the quantity. It is the quantity of a good. It is the quantity of a good available for sale in the market. It is that quantity which is available for Yes, sir. sale in the market. Sale. It is the quantity of a good available for sale in the market at a given price. एक given price पे कितना मार्केट में अवेलेबल है जो सेलर तैयार है बेचने के लिए उस क्वांटिटी को कहते हैं दिस इज सप्लाई. दिस इज Supply. so supply is the quantity of a good that a seller is willing and able to sell at a given price. तैयार है वो इस प्राइस पे बेचने के लिए ये क्वांटिटी जो क्वांटिटी उसने तैयार रखी है मार्केट में बेचने के लिए और which is available for the consumers in the market at a given price. It's that quantity which is available for consumers to buy Yes. in the market at a given price. Generally we say also one of the definition we can quote here for supply is that it is the quantity offered for sale. और एक भी हम दे सकते हैं it is the quantity offered for sale. Offered for sale. It's the quantity offered for sale in the market. Offered quantity offered for जो ऑफर की गई क्वांटिटी सेल करने के लिए उसको कहते हैं सप्लाई. सो सप्लाई अब देखना है कि किस चीज से ये इफेक्ट होता है, ये किस चीज से चेंज होता है. There are so many factors, Yes, sir. things which can bring a change in the supply of a commodity. The main player, the main item which changes the supply is, we can say, supply changes with change in price. Changes with change in price. It mainly changes with change in price when other thing is remaining same.
when other things are same. So supply changes with change in market, in price. Supply changes, market में कितनी supply रहेगी? It is decided by the price. It is decided by the price. So when price falls, supply also falls. Supply also falls. And when price rises, so हमने आपका नेट कुछ ठीक नहीं चलता Yes, है, connection थोड़ा weak है. मुझे भी प्रॉब्लम हो गई. मैं 11th में क्लास ठीक तरह से नहीं दे पाया. तो हम डिस्कस कर रहे थे कि सप्लाई चेंजेस विद चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग. Yes, sir. प्राइस के बगैर भी बहुत से फैक्टर्स वो हम Same. आगे आगे जाके पढ़ेंगे क्या क्या फैक्टर्स सप्लाई चेंज करते हैं. जिस तरह डिमांड के डिटरमिनेंट्स हैं, डिमांड चेंज होती है ड्यू टू Yes, sir. चेंज इन सो मेनी फैक्टर्स. इसी तरह सप्लाई की भी बहुत से फैक्टर्स हैं. तो मेन फैक्टर इज प्राइस. हम इसीलिए कहते हैं सप्लाई चेंजेस विद चेंज इन प्राइस. हियर अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. Yes, sir. अगर प्राइस फॉल हो गया, इवन प्राइस फॉल्स, सप्लाई आल्सो फॉल्स. When price rises, Yes, supply also rises. Supply also rises. इसका मतलब है there is. इसका मतलब है there is direct or Direct positive relationship. or Yes, sir. positive relationship between price and supply. Quantity supply. Yes. Supply और price के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है. डायरेक्ट रिलेशन है. डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन हम उसको कहते हैं जब एक चीज बढ़ जाए दूसरा भी बढ़ जाए, एक चीज घट जाए दूसरा भी. Yes, sir. एक चीज आगे बढ़े दूसरा भी आगे बढ़े, उसके साथ साथ आगे बढ़े. ठीक है. एक चीज पीछे जाए दूसरा भी पीछे जाए. So Yes, sir. is simply the definition of supply. Supply. Definition of supply. अब सप्लाई के साथ और एक चीज भी कनेक्टेड है. Can you tell me what is that concept? The stock. Stock. Yes, exactly. Because when we look upon the market, when we look upon a shop in the market, the producer or seller has two quantities, two types of quantities there. One is supply and another is stock. Stock. Supply and stock. Now, what is Stock. difference between the supply and stock? पहले हमने supply पढ़ा है. It is the quantity of a good offered for sale at a given price. जो quantity तैयार है sell करने के लिए, उसमें कोई ifs buts नहीं है on the part of the producer or seller. वो उसमें नहीं कह सकता है कि ये मैं नहीं बेच दूंगा, because already offered it for sale. Yes, sir. Willing and he or she is willing and able to sell this much quantity at given price. At given price. Now, what is stock? Now, what is stock? Stock क्या चीज? ये stock क्या है? It is the quantity of a good actually offered for sale, but stock is excess of good in the market or the goods offered for sale. It is the excess of goods in the market or the goods offered for sale, or we can say it is the quantity of a good in addition to supply. The quantity Yes, sir. of a good in the market, Market. in excess to supply. In excess to supply.
in excess to supply. So the quantity which is in excess to the supply, which the firm or the producer or the seller is not willing and able to sell at the given price. This is the quantity which is available in the market, but producer is not willing and able to sell at the given price. He or she is waiting if market conditions are favorable. So it can become supply, stock can become supply if market conditions are good. If market conditions are good. Thus, stock is total quantity. It is total quantity. Total quantity which a seller can sell. Total quantity of a good which a seller can sell. Which a seller can sell if market conditions are favorable. If market conditions are favorable. Market conditions are favorable or price is favorable. Favorable. If market conditions are favorable or prices. So we can say supply is part of stock. Supply is part of stock. Stock is not part of supply, but supply is part of stock. Understand? Yes, supply is part of stock. For example, yes, this is a complex in the market in which there are goods available for the producer. But in addition to complexes, there is a shop. So when market conditions, this is market here, this is market. If market conditions are favorable, the stock can become supply. So whatever is here available, it is supply. जो शॉप में दस्तयाब है वो सप्लाई है, वो सप्लाई है, वो सप्लाई है. जो गुडाउन में उसके पास है वो स्टॉक है, वो स्टॉक है. अगर मार्केट कंडीशन ठीक रही तो ये स्टॉक चेंज हो जाएगा सप्लाई में. If market conditions are not favorable, it can remain here till the time reaches when it can change into supply. Conditions are favorable. Conditions becomes favorable. So we can say supply is, this whole is stock. This whole is stock. Supply is one of the part of this stock. Supply is one of the part of this stock. Thus, supply is part of stock and also a major part of a good which is hoarded. Thus, what is stock? Stock is that part, that quantity, that part of goods and services, or that quantity. It is, stock is that quantity, that quantity of a good, that quantity of a good which is kept by the seller or producer, by the producer, seller or producer for sale in future, for sale in future, for sale in future at increased prices, at good prices or at increased prices, or when market conditions are favorable. So this is difference between supply and supply. Supply is simply the quantity of a good offered for sale in the market at a given price, or it is the quantity of a good which a seller or a producer is willing and able to sell at a given price. It is a quantity, yes, sir, a seller is willing and able to sell. It has direct relationship with price. Supply has direct relationship with price. Price. Yes. So the next is, next हम इसमें कहते हैं, हम डिस्कस करेंगे
सप्लाई शेड्यूल, और एक चीज है इसमें सप्लाई शेड्यूल। कुछ आइडिया है? पढ़ा है ना? हिम्मत पढ़ा है आपने? यस सर, ये दिखाता है जो वेरियस क्वांटिटी कमोडिटी की जो वेरियस प्राइस पे हम बाय करते हैं, मतलब ये इट शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी सप्लाइड एट वेरियस प्राइस। Yes, supply schedule is a table. It is a table which shows. Yes. It is a table which shows quantities of a good or different quantities of a good. Different quantities of a good. Different quantities of a good offered for sale. Offered for sale. It is the different, it shows, or it is a table which shows different quantities of a good offered for sale in the market at different prices. Yes, sir. When it shows different quantities are sold at different prices. If one quantity is sold, Yes, that one quantity is for one price, one quantity for one price. Different quantities are sold, offered for sale, or supplied to the market at different prices. So, what is schedule? Schedule means table. A table will show the different quantities of a good offered for sale by a producer or seller or at different prices in the market at different prices. Or we can say it shows the quantity of a good. Generally, it shows different quantities. So this is final definition. It shows different quantities of a good offered for sale or supplied to the market. We can say it's a table which shows different quantities of a good supplied at different prices. At different prices. At different prices. It also shows, this table also shows, it also shows direct or positive relation. Positive relationship between quantity supply and price and quantity supply. When other things remain as same. So the tabular form of different quantities offered for sale by an individual firm or by a producer at different prices. At different prices. We can construct, how to construct this construction of supply schedule. How to make a supply schedule. Then later on we can construct a supply curve from a supply schedule. First we have to see the supply schedule. See the supply schedule. So supply schedule, we know that it shows relationship between price and quantity supply. Supply schedule shows a relationship between price and quantity supply. Price and quantity supply. Now how this can be shown numerically or in the form of a table? We have two. When we have relationship between price and quantity supply, we can make supply rule. We have price and we have quantity supply. Quantity supply. लिखते हो? Yes, sir. We have in rupees and quantity supply, for example, in kgs. This is supply rule. Supply rule shows only two columns. Yes, sir. Price and quantity supply. Price and quantity supply. For example, price of a good is 5 rupees. Price of a good is 5 rupees. And for example, it is 10 units are sold in the market or supplied to the market. Sold की बात तो अलग है, वो demand पे depend करता है.
This is the quantity which a supplier or a seller is willing to sell. तो अभी सेल उसने नहीं किया है, ये इसने दुकान में रखा है इतना माल, इतना माल वो तैयार है बेचने के लिए। 5 रुपया जब मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस, who decide the market price? जो प्रोड्यूसर होता है। परफेक्ट कंपटीशन में कौन तय करता है मार्केट प्राइस? फर्म। परफेक्ट कंपटीशन में फॉर एग्जांपल ये एक मार्केट है। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? इसमें कितने सेलर्स होते हैं, कितने फर्म्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं? So many means unlimited. We cannot. हाँ yes sir, मतलब बहुत सारे। ये परफेक्ट कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल ये एक फर्म है, ये एक फर्म है, ये भी एक्स बनाता है, ये सारे फर्म्स एक्स बनाते हैं। yes sir, हम उसी हिसाब से मार्केट पढ़ते हैं, एक ही कमोडिटी का मार्केट हम पढ़ते हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, सारे एक्स बनाते हैं। ये मार्केट है, इसमें खाली एक्स प्रोड्यूस होता है और सेल होता है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ फर्म, दिस नेम ऑफ द फर्म इज ए ने एक्स बनाया, बी ने बी, सी ने बी, डी ने बी, एटसेट्रा, एवरी फर्म हैज प्रोड्यूस्ड एक्स। क्या ये ए प्राइस इसका डिसाइड कर सकता है? आप बताती हो हाँ, फर्म डिसाइड करती है। नो सर, फर्म होती है सिर्फ प्राइस मेकर, प्राइस टेकर। एक तो होता है मेकर, दूसरा होता है टेकर। हेलो, हाँ जी, फर्म होती है ना, वो प्राइस टेकर होती है। प्राइस टेकर होती है, इसका मतलब है ये फर्म ए एक्स का प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती है। फिर कौन सी चीज प्राइस डिसाइड करती है? पढ़ा है ना, हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड इन द परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिसाइड होता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। समझ आया? अच्छा, अब उठाइए, ये प्राइस डिसाइड हुआ है परफेक्ट मार्केट में, तो एक फर्म, फॉर एग्जांपल फर्म ए, ये ऑफर करती है, सप्लाई करती है 10 kg। अब अगर प्राइस बढ़ गया, 10 हो गया प्राइस, तो सप्लाई का क्या होगा? सप्लाई कम होगी या ज्यादा होगी? हेलो, यस सर, सप्लाई कम होगी या ज्यादा होगी अगर प्राइस बढ़ गया फ्रॉम 5 to 10? सर ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, इट विल इंक्रीज टू 20। अगर प्राइस 15 हो गया और बढ़ जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। यस सर। अगर और प्राइस बढ़ गया तो ये फॉर एग्जांपल 40 होगा। अगर और प्राइस बढ़ गया 50 होगा। तो एज प्राइस राइजेस, the suppliers, producers will increase their supply. Producers will increase their production and supply more and more. That's why we say there is direct and positive relationship between price and quantity. Price and quantity supply. Price and quantity supply can be act as individual supply schedule also. Individual supply schedule. Individual supply schedule में simply होता है, individual supply schedule shows different quantities of a good supplied by an individual firm, by an individual seller, by an individual producer. एक ही producer है। फिर हम बाद में पढ़ेंगे market supply. Market supply. So what is supply schedule? Supply schedule is that table which shows different quantities of a good, different quantities of a good supplied to the market at different prices, at different quantities of a good supplied at different prices, supplied at different prices or offered for sale at different prices. जब एक फर्म की सप्लाई शेड्यूल हम पढ़ते हैं, that becomes the individual supply schedule. That becomes the individual supply schedule.
अब अगर मार्केट सप्लाई रूल की बात हम करेंगे, लेट अस डिस्कस दैट मार्केट सप्लाई रूल. सो सप्लाई रूल हैज टू टाइप्स, टू काइंड्स. इट हैज, Yes, sir. ये याद रखना है, Types. it has two kinds. It has two kinds: individual supply rule and market supply rule. Market The second supply. is market supply rule. Market supply rule. Market supply rule. What is this market supply rule? It is a table Which shows various amounts of a commodity. Which shows various quantities of a good supplied by all firms Yes, in the market at different prices. At different prices. So it is the table which shows different quantities of a good or various quantities of a good supplied by all the producers, all the firms, all the sellers to the market at different prices. It also shows positive relationship between positive or direct relationship between price and quantity supply. Relation between price and quantity supply. So that table or tabular form of different quantities supplied by all the firms at different prices. The table showing direct relationship between price and quantity supply of all the sellers is called a market supply schedule. Now we can make a sketch of this simple construction, how to construct a table for market supply schedule. Market. Yes, sir. आता है? Yes, sir. वहां हमें एक ही फर्म थी, यहाँ बहुत से थी, यहाँ से हमें लेनी है, यहाँ बहुत से हैं. For example, we have price for a good. Here we have quantity supply by, for example, firm A. Because yes, in the market, in the Handwara market or in the Lal Chowk or in the Sopur or in the Baramulla, there are so many sellers, firms, supplying and selling a product. How many firms? We have shopkeeper A or producer A. We have quantity supply of B. Yes, sir. Shopkeeper उसने कितना supply किया इस price पे, B ने कितना supply किया इस price पे. Yes, sir. C ने कितना ये supply किया, quantity supply by D. D ने कितना supply किया. शाम के वक्त हम देख सकते हैं कि मार्केट में कितनी सप्लाई है. मार्केट में या किसी भी टाइम पे 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, किसी भी at any particular time, at a given time, किसी भी टाइम पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि A ने कितना सप्लाई किया, कितना तैयार है बेचने के लिए, A कितना तैयार है बेचने के लिए, C कितना तैयार है, D कितना तैयार है. जब हम हर एक की सप्लाई को ऐड करेंगे, we get the market supply. We get the market supply. Supply of A plus B plus C plus D. For example, our price is वही उठाएंगे 5 rupees. Price is 5 rupees. Yes, sir. एक प्रोड्यूसर है, वो 10 यूनिट्स सप्लाई करता है मार्केट में. उसने अपने दुकान में 10 यूनिट्स रखे हैं, ये इतना में बेच सकता है. I am willing to sell this much of quantity. B, for example, 20 units sell करने के लिए तैयार है. 15 units C, for example. B 25 units. जब गिन लेते हैं ये कितनी सप्लाई आ गई, 20 plus 10, 30, 40, 50,
70। ठीक है, इसका टोटल सम ये बन गया मार्केट सप्लाई। दिस इज मार्केट सप्लाई। अगर प्राइस इंक्रीज है 75 वो तो 70 नहीं 70 ही आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये इंक्रीज करता है 15, ये भी इंक्रीज करता है 25। फॉर एग्जाम्पल ये इंक्रीज करता है 20 तक। फॉर एग्जाम्पल ये बिलिंग सॉरी हर एक बढ़ाएगा, क्या होता है प्राइसेस बढ़ गई। 15, 25, 20, इसका हो गया 30। इसी तरह अब टोटल करो, ये कितना हो गया 40, 60, 90। ठीक है, अगर और प्राइस बढ़ गई 15, ये भी इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। अगर और प्राइस बढ़ी, जितना प्राइस बढ़ जाएगा तो हर एक की सप्लाई बढ़ जाएगी। 35, दिस इज 30, दिस इज 40। अगर और प्राइस बढ़ गई, फॉर एग्जांपल 25 ये 30 है, ये 40 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। और मैं तो ये फिगर लिखता हूं, आप कुछ भी फिगर लिख सकते हो, बट मोर देन 30, मोर देन दिस है, जो प्रीवियस है उससे ज्यादा होना चाहिए जब प्राइस बढ़ गई। अगर प्राइस कम हो गई तो कम हो जाएगा सब 45। सो दिस इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। यहाँ कितना हो गया 50, 70, 80, 110 कुछ हो गया। So this is all about supply, market supply schedule. Thank you very much. तो ये ठीक हो गया।